Good evening, dear students. Welcome to Matrix DigiLearn, and today we will discuss about the advanced Microsoft Excel. आमे समस्ते जानिचे Microsoft Excel कंप्यूटर क्षेत्र रे गोटे गुरुत्वपूर्ण जिंस बा गुरुत्वपूर्ण टॉपिक जहा ऊपर कि आमे समस्ते क्लियर रहिबा निहाती दरकार। मु भी अनेक थर पूर्व क्लास रे तुमको एक्सेल रो बेसिक को नहीं एक्सेल रो किसी स्टैंडर्ड जिंस पर्यंत डिस्कशन करिछि। ताले जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आमे कहूचे बा एमएस एक्सेल कहूचे एटा होची गोटे हमर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जहा कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा डेवलपमेंट कराइछि। ताले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज एन spreadsheet application software from Microsoft company. And what is spreadsheet? Spreadsheet means it is a table of values arranged in rows and columns, and each value have a predefined relationship with other value. If we change one value in a data range, then its related values will also change. Spreadsheet होची गोटे टेबल भली जिंस जोथिरे कि साधारणतः आमे अनेक गुडाए गार गार पडिथिबा देखिबा किछि हॉरिजॉन्टल गार एवं किछि वर्टिकल गार गुडाक पडिथिबो ताले सेई जो हॉरिजॉन्टल एवं वर्टिकल ग्रिड्स गुडाक पडिबा द्वारा हम स्प्रेडशीट रे अनेक गुडाए रो एवं कॉलम तयारी हितै। ताले एक्सेल रे आमे पाखापाखि 10,48,576 रो एवं 16,384 टा कॉलम पाउ। ताले सेई जो रो एवं कॉलम द्वारा जेतबे इंटरसेक्ट हुअंती बा परस्पर को छेद करंती गोटे गोटे सेल तयारी हुए। से सेल मानक रे ही आमे डाटा गुडा को एंट्री करू। जहा भी हो से एक्सेल रो बहुत सारा तो इंफॉर्मेशन आमे पूर्व डिस्कशन करी छे ता रिलेटेड किछि एडवांस वे रे आमे आज तर एमसीक्यू गुडा को कवर करिबा। ताले तम पई फर्स्ट क्वेश्चन आसुची स्क्रीन रे ए जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल तमे कहूचो ए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो प्रथम क्वेश्चन तम पई रहउची व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन used by Excel 2016 and later version. Microsoft Excel रो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन कोन यूज करा जाय 2016 बा ता पर वर्जन गुडा करे ऑप्शन अछि .xls .xlsx .xlsm .xlsb. Which is the right answer? Anyone can give the अच्छा मो वॉइस समस्त सुनी पारुछ वॉइस समस्त मोर सुनी पारुछ गिव द रेस्पॉन्स सिंपली बाय चैट वॉइस समस्त मोर क्लियरली सुनी पारुछ ओके थैंक यू। अच्छा एबे हमें प्रोसीडिंग करिबा ताले मोर प्रथम प्रश्न रा ठीक ऑप्शन कोठा हबो ए ना बी ना सी ना डी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रो फाइल एक्सटेंशन ता कोन? एनीवन? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हमें जिते क्विकली रेस्पॉन्स दबा सेते अधिक क्वेश्चन कवर करि परिबा। The right answer is .xlsx. ताले सी द आंसर। ताले राइट आंसर होची .xlsx. Okay, next question for you. Quiz area in Excel displays the active cell address. Quiz area in Excel displays the active cell address. Option A formula bar, option B status bar, option C name box, and option D ribbon. Which is the right answer? Quiz area in Excel displays the active cell address. Anyone? The right answer is name box. तमे देखि थिबो एक्सेल रो जो स्क्रीन रो लेफ्ट हैंड साइड रे नेम बॉक्स थाए। जनरली सिटी
तार सेल रो नाटा देखौथाय ताले सेल नेम माने कोन सेल नेम माने दैट इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ रो एंड कॉलम धरिनियो ए कॉलम एबो वन रो परस्पर को छेद करिछि बा इंटरसेक्ट करिछि से सेल ना होछि A1 ताले सी सेही कथा कहूछि एक्सेल रो एक्टिव सेल रो एड्रेस ता को जगह रे देखा जाय नेम बॉक्स रे ही देखा जाय ताले द नेम बॉक्स इन एक्सेल डिस्प्लेज द रेफरेंस ऑफ द एक्टिव सेल हमें बहुत जहाँ भी करू से रिलेटिव सेल रेफरेंस हो बा ऑब्सोलेट सेल रेफरेंस हो बा मिक्स्ड सेल रेफरेंस जहाँ भी एक्सेल रे यूज करा जाए सेटा नेम बॉक्स रे ही जणा पड़े ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट डज a cell's field handle typically look like what does a cell's field handle typically look like option a solid square a dotted line a diagonal arrow and a circle which one is the right answer what does a cell's field handle typically look like A, B, C, या फिर D. Anyone can give the response. If you know the answer, give the response simply by chat. Anyone? You have give response as A. The right answer is A solid square. Question रो माने होची एया जे जो सेल रो फील हैंडल माने सेल को हमें सिलेक्शन करछे ता फील हैंडल ता सेटा केमिति देखा जाय बा सेटा केमिति देखा जाय हमें टाणीबा कि ताकू ये करबा सेटा गोटे पूरा भल्लो भाबे गोटे माने कोन कळा हेई के पूरा देखा जाउथबो घर भलिया तेनु करी आ भितर कोनोसी ऑप्शन बी नुह सेटा होची सॉलिड स्क्वायर आकार देखाय बा डीप कळा हेई के पूरा देखाय ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which feature would use to capture and analyze data from multiple sheets into one worksheet? Which feature would you use to capture and analyze data from multiple sheets into one sheet? Anyone? Which is the right answer? You have give the D. The right answer is C. Why? So question दिला which feature? को feature टा would you use? तमे व्यवहार करो capture and analyze data. Capture करिवा माने एकाटी करिवा एवं analyze करिवा पाई अलगा अलगा वर्कशीट रो डाटा को ताले कंसोलिडेट रो माने होची एया जे consolidate is a feature in Microsoft Excel that groups data from multiple worksheets within the same workbook into a single worksheet ताले अलगा अलगा वर्कशीट रे थिवा डाटा गोडा करो एकाठी करिकि ग्रुपिंग करिकि गोटे सेही वर्कबुक भितरे आउटे वर्कशीट रे आनिबा को डाटा को कहंदे कंसोलिडेट द्वारा मल्टीपल वर्कशीट रो डाटा को सारांश आकारे गोटे सिंगल वर्कशीट को आना जाई पारे So the consolidated feature in Microsoft Excel allows the users to combine and analyze data from multiple sheets into a single worksheet. Okay, next question for you. What functionality does the freeze panes feature provide in Excel? What functionality does the freeze panes feature provide in Excel? Option A, securing data, hiding data, deleting the window, and locking rows or columns. Which functionality does the freeze panes feature provide in Excel? Anyone? The right answer is you have give the A. The right answer is locking rows or columns. Freeze panes. Freeze माने तमरो कोन हुए जेमति कि धरि नियो तमरो गोटे वर्कशीट रे पाखा पाखि 1000 डाटा एंट्री हिची तो से जो 1000 डाटा एंट्री हिची
बेसिकली तीनटा हेड रे एंट्री हिच गोटे नेम गोटे आधार नंबर आ गोटे हला एड्रेस ताले नेम तळकू 1000 टा ना एंट्री हिच तमरो आधार नंबर तळकू से 1000 जन का आधार नंबर उडा के एंट्री हिच देन तमर एड्रेस रे एड्रेस उडा का भी एंट्री हिच मोर कोन करिवार अछि गोटे वर्कशीट टा को देखिवार अछि से 1000 टा डाटा को मते कैप्चर करिवार अछि तो 1000 टा डाटा तो एका समय रे मते स्क्रीन रे देखा जीव नहीं मैक्सिमम 20 रु 25 टा डाटा मु देखि परिबी ताले किंतु मु जदि स्क्रॉल कर दूची हेडिंग रोज टा भी स्क्रॉल ही जीवो ताले से क्षेत्र रे मु करिबी कोन मते हेडिंग रो टा को कांस्टेंट रखिवार अछि एंड अन्य रो गुडा को स्क्रॉलिंग करिवार अछि ताले एई भली पद्धति रे हेले 20 पर्यंत डाटा पळैला पुनी तापर हेडिंग ता जेंति रहिया कथा सेंति रहिछि तापर पुनी 21 टा डाटा पुनी डिस्प्ले हला सेही हेडिंग रे ताले फ्रीज पेन्स रो काम होला टेम्पररीली ये कोन करिथिबो दा लॉक कर देथिबो रो आ कॉलम को माने रो टा माने कांस्टेंटली रहि गला से जो नेम आधार नंबर एंड ये डाटा गुडा को मु स्क्रॉलिंग करली जेंति कि मु जानि परिबी जे एई हेड रे एई डाटा गुडा का एंट्री हिच सो राइट आंसर इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू how can you quickly select an entire worksheet in Excel? Option A, click the corner button, double click a tab, right click a tab, use a shortcut. Which is the right answer? A, B, C, or D? How can you quickly select an entire worksheet in Excel? Anyone? The right answer is click the corner button. तमे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पचारि थिला शीघ्र केमिति गोटे वर्कशीट को सिलेक्शन करिवो ताले डबल क्लिक टैब मारले तो हबो नाही राइट क्लिक करले भी टैब ऊपर हबो नाही कारण ऑप्शन उडा से तो बाहरिबो शॉर्टकट फटकट से तो किछि तो न शॉर्टकट जदी भी शॉर्टकट दा कोन कीटा कहिबार भी थिला ताले क्लिक द कॉर्नर बटन ता माने देखिबो रो 1 2 3 4 की लिखा आइछि कॉलम गुडा को एबीसीडी की पढिछि देखिबो गोटे वर्कशीट रो गोटे पॉइंट अछि से पॉइंट होछि संपूर्ण ब्लैंक मान ना सेठी रो अछि ना सेठी कॉलम अछि माने सेटा कोठी अछि टॉप लेफ्ट कॉर्नर माने कोन वर्कशीट रो ऊपर एबो बां पट कोन एटा वैकेंट पूरा अछि सेही कॉर्नर रे जदि तमे क्लिक कर दउचो ताले संपूर्ण वर्कशीट इजीली सिलेक्शन हो जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हिच की कॉम्बिनेशन इज यूज्ड टू insert a new worksheet in Excel. Which key combination is used to insert a new worksheet in Excel? Option A, Control plus N. Option B, Control plus P. Option C, Control Shift N and Shift plus F11. You have give response as option A. The right answer is option D, Shift plus F11. Control N आमे क्वेश्चन थिला वर्कशीट केंती ऐड करा जिवो वर्कबुक कथा मु पचारिनी एक्सेल रो जनरली फाइल टाकू वर्कबुक बोली कहंती एबो जोथिरे आमे काम करूचे ताकू गोटे गोटे वर्कशीट बोली कहंती जेंती वर्ड रो फाइल टाकू आमे कहिताउ कोन बोलली डॉक्यूमेंट्स बोली कहिताउ एबो वर्ड जहा धरे काम करा जे सेगुडा गोटे गोटे पेज पावर पॉइंट रो फाइल टाकू सेंती कहंती प्रेजेंटेशन जोथिरे काम करा जे ताकू गोटे गोटे कहंती स्लाइड एक्जेक्टली सेंती एक्सेल रो फाइल टाकू कहंती वर्कबुक एबो जोथिरे काम करा जे ताकू कहंती गोटे गोटे वर्कशीट ताले मोर प्रश्न थिला जे आमे को की कॉम्बिनेशन मारिले नुवा वर्कशीट ऐड हुए जेंती कि शीट 1 शीट 2 शीट 3 अछि को कीटा मारि देले आ गोटे शीट 4 पळे आसीबो कंट्रोल एन हेले नुवा वर्कबुक हबो किंतु शिफ्ट सहित F11 मारिले हमर कोन हि जिवो गोटे नुवा वर्कशीट ऐड हि जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द क्विकेस्ट वे to resize a column to fit its contents?
What is the quickest way to resize a column to feed its contents? Option A, double click the column header, drag the header, right click and select resize, use format options. Which option is the right answer? What is the quickest way to resize a column to fit its contents? You have give response as B. तमें आंसर देलो ऑप्शन बी टा ही हबो देखबा आंसर राइट आंसर डबल क्लिक द कॉलम हेडर सबुठारु से पचारथिला शीघ्र बाट कोटा धरिनियो गोटे सेल रे तमे डाटा एंट्री करिछो किंतु से सेलटा से जो टेक्स्ट गुडा को संपूर्ण रूपे शो करू नाही ताले सेटा कोन हेतिबो लेखाटा ता भितर स्क्वीज हेकि रहि जाईछि ताले एमानक भितर कोटा होछि सबुठारु सहज बाट शीघ्र बाट जोटा कि कंटेंट जेतबे कोन करिवो से कॉलम हेडर रे तमे डबल क्लिक कर दबो से मनु मन फिट कर दबो लेखाटा ताले ऑप्शन ए टा होछि राइट आंसर डबल क्लिक द कॉलम हेडर नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू What shortcut performs the paste special operation in Excel? What shortcut performs the paste special operation in Excel? Option A, Control plus B, Control Alt plus B, Control plus Shift plus B, and Alt plus E, and option S. What shortcut performs the paste special operation in Excel? हमें कट कॉपी पेस्ट जानि छे पेस्ट स्पेशल भी सेमती गोटे ऑप्शन अछि ताले एमानक भितर कोटा सेटा यू हैव गिव आज सी तो राइट आंसर ऑल्ट कंट्रोल भी पेस्ट स्पेशल पाई कंट्रोल सहित मारंती हमर तमे जो कहलो कंट्रोल शिफ्ट भी रॉन्ग ऑल्ट कंट्रोल भी होची पेस्ट स्पेशल पाई कंट्रोल भी होची हमर पेस्ट पाई एंड ऑल्ट कंट्रोल भी होची पेस्ट स्पेशल पाई ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू अप्लाई ए करेंसी फॉर्मेट टू ए सेल इन एक्सेल हाउ डू यू अप्लाई ए करेंसी फॉर्मेट टू ए सेल इन एक्सेल ऑप्शन ए राइट क्लिक एंड चूज फॉर्मेट सेल्स use the dollar button and on home tab control plus shift plus dollar and all of these एमानक भितर कोठा होचे राइट आंसर हाउ डू यू अप्लाई ए करेंसी फॉर्मेट इन एक्सेल anyone can give the response the right answer is this one all of the above तमे जहां भी कले करेंसी सिंबल अप्लाई हेबो केमती तमे जदी गोटे सेल को सिलेक्शन करि दोछो राइट क्लिक कर दोछो फॉर्मेट सेल्स रो डायलॉग बॉक्स ओपन होउची फॉर्मेट सेल रो डायलॉग बॉक्स भितरे गोटे नंबर टैब अछि तापरे अलाइनमेंट अछि एमती अछि तो से नंबर टैब भितरे करेंसी को जाई की भी करेंसी फॉर्मेट अप्लाई करि परिबो यूज द डॉलर बटन ऑन द होम टैब रे भी ए सिंबल ता अछि से जो सेल को सिलेक्शन करके एटा भी अप्लाई कर देले भी से सिंबल ता भी अप्लाई हो जिवो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर जदी भी मारी दोछो ताहले भी डॉलर साइन भी शॉर्टकट की रे भी अप्लाई हो जिवो ता माने जेहेतु सब तक ठीक ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ही ठीक नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दिस वन हाउ वुड यू क्विकली फाइंड all the cells in worksheet that contain formulas how would you quickly find all cells in a worksheet that contain formulas option A use find feature option B filter by color option C go to special option D use trace precedence which option is the right answer you have give as C the right answer
The right answer is this one. C. Go to special. से कहितिला गोटे वर्कशीट रे जोटी जोटी फार्मूला अछि ताको हमें इजीली केमती खोजी की बाहर कर दे परिबा बस से सब फार्मूला डा को कोटी कोटी सेल रे यूज हेछि सेगुडा को स्पेशल केमती हाइलाइटिंग हबो यूज फाइंड फीचर जमा हबो नाही फाइंड फीचर केवल स्पेशली टेक्स्ट गुडा को खोजा जाय परिबो फार्मूला नुही फिल्टर बाय कलर से तो अलगा काम कलर अनुसार फिल्टरिंग करिबा से होची फिल्टर रो काम गो टू स्पेशल गोटे डायलॉग बॉक्स से गो टू स्पेशल रे तमे फार्मूला को चूज कर देले सेल रो जो फार्मूला रो वर्कशीट रे अप्लाई करा जाइथिबो बा वर्कशीट रो जो सेल रे फार्मूला उडा पडिथिबो स्पेशल से को देखै देबो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट फीचर शुड you use to compare two Excel worksheets side by side? What feature should you use to compare two Excel worksheets side by side? Option A, new window. Option B, arrange all. Option C, view side by side. And option D, split. What feature should you use to compare two Excel sheets side by side? Anyone? The right answer is view side by side. ताले side by side माने कोन हमें बुझिबा टिके दरकार धरि नियो तमरो अनेक गुडाय वर्कशीट को एका समय रे तमे गोटे स्क्रीन रे देखिया को चाहूछ एमिति गोटे वर्कशीट देखा जाउची ताले जदी एक रु अधिक वर्कशीट को गोटे समय रे देखिबा को चाहूछ ताहले सेठी पई तमु कोन करिया को पड़िबो व्यू साइड बाय साइड रो यूज करिया को पड़िबो जहां फल रे कि एका समय रे जेतिकटा वर्कशीट को दुईटा कि तीनटा जहां भी वर्कशीट को जहां तमरो थिबो तम वर्कबुक भितरे सोडा सब सजेई कि गोटे स्क्रीन रे देखा जिवो सो व्यू साइड बाय साइड is the right answer. Next question for you. What symbol is used to start a formula in Excel? What symbol is used to start a formula in Excel? Option A, @ option B, hash, option C, equal to, option D, plus. Very easy question. What symbol is used to start a formula in Excel? Anyone? Yes, that is right answer. Option C is the right answer. You have give the right answer. Equal to. All formulas in Excel must be begin with an equal to sign. Without equal to sign, the entry is interpreted as regular data as text or numbers. So, जदि समान चिन्ह रु एक्सेल रो कोनोसी फार्मूला आरंभ न होई थाए से धरि निए सेटा गोटे फार्मूला नुहे सेटा गोटे जनरली एमती किछि लेखा आइछि जदि मन को तमे लिखि दैछो a1 + b1 + c1 ता पूर्वरु समान चिन्ह देइना से धरि नबो a टा होछि गोटे अक्षर 1 टा होछि गोटे तमरो नंबर b टा होछि भी गोटे तमरो लेटर B1 टा होची गोटे नंबर प्लस गुडा को गोटे कोन गोटे सिंबल दिया आइछि से ताको फार्मूला हिसाब रे कंसीडर करिवो नाही तेनु करी as the rule all formulas in Excel must be begin with an equal to sign निश्चित भाबे समान चिन्ह रु आरंभ बा दरकार ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू which function would you use to calculate the average value of a range of cells? Which function would you use to calculate the average value of a range of cells? Range of cells रो average value पाइबा को ले एमानक भितरु को फंक्शन को तमे यूज करिवो you have give as B yes this one is the right answer average function रे ही गोटे वर्कशीट रो average value को हमें देखि परिबा Next question for you. In Excel, which function returns the current date and the time? In Microsoft Excel, which function returns the current date and the time? Option A, today. Option B, now. Option C, date. Option D, time.
The right answer is today. Why? Sorry, now. Date and time. जदि केवल डेट पचरा जाए ताले टुडे. जदि डेट विथ टाइम पचरा जाए ताले नाउ. ताले सिस्टम रो आजिरो डेट एबो एबेरो रिसेंट समयटा हमरो व्यू होई परिबो. ताले एक्सेल रो नाउ फीचर रे आमे बा नाउ फंक्शन को यूज करी आमे करेंट डेट आउ टाइम को देखि परिबा. नेक्स्ट आसला हमरो what function would you use to find the lowest number in a range of data? What function would you use to find the lowest number in a range of data? Option A, mean. Option B, max. Option C, lower. Option D, least. You have give as A is this one is the right answer. Mean होची गोटे फंक्शन जहा की डाटा रेंज रो थिबा सबुठारु छोट नंबर टाकू हमको देखाए. मैक्स होची सबुठारु बड़ नंबर देखाए. लोयर होची नुहे. लोयर होची गोटे टेक्स्ट रिलेटेड फंक्शन जहा की बड़ लेटर रे थिबा बा अन्य कोनोसी लेटर रे थिबा अक्षर गुडा को छोट लेटर को बा स्मॉल लेटर को कन्वर्ट करि थाए. सो मीन का होची गोटे फंक्शन जहा की आम डाटा रेंज रो सबुठारु क्षुद्रतम वैल्यूटा केते रिटर्न देई थाए. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. What does the count a function do in Excel? What does the count a function do in Excel? Option A, counts cells contains any type of data. Option B, counts only cells containing formulas. Option C, counts empty cells. Option D, counts cells containing numbers. Anyone can give the response? The right answer is you have give as B. The right answer is option A. B. तमे से पचारिथिला count A function रो काम कोन. तो count A होची गोटे फंक्शन जहा की सेल रे थिबा समस्त वैल्यू गुडा को कंसीडर को निए. काउंट अछि, काउंट A अछि, काउंट A अछि, एंड बहुत सारा अछि. काउंट if अछि. तो मु कहबा कथा काउंट A रो काम कोन. ताले सेटा नंबर हेतिले भी ताको काउंटिंग को नबो. लेटर थिले भी काउंटिंग को नबो. जहां भी लेटर नंबर मिसई के थिले भी काउंटिंग को नबो. ताले काउंट ए रा कामला केतरा सेल रे डाटा एंट्री हिची एक्सेल रो काउंट ए जदी पडिथिबो ए टू ए रेंज पर्यंत तले सब तक दबो ए टू ए पर्यंत एतिटा डाटा अछि. काउंट रे केवल नंबर गुडा को नबो. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. व्हिच फंक्शन can be used to conditionally sum values in a range based on a criterion? Which function can be used to conditionally sum values in a range based on a criterion? Option A, sum if. Option B, sum. Option C, if sum. And option D, total if. Which function can be used conditionally sum values in a range based on a criterion? You have give response as A. Yes, this one is the right answer. Sum if. आमे से कहितला को एमानक भितरु को फंक्शन टा को व्यवहार करा जाए शर्त भित्तिक सम वैल्यू बा मिश्रण फल बाहर करिबा गोटे डाटा रेंज. सम रो काम होला मिश्रण बाहर करिबा. एंड सम इफ रो काम होला adds all the numbers given as an argument. ताले सेही संख्या मानन को हमें मिसेइबा जोटा कि हम कंडीशन बा शर्त रो पूर्ण करथिबो. ताले कंडीशन बा शर्त भितरे सेल को आर करिबा कोले सम इफ रो यूज करा जाय. Option A is the right answer. Next question for you. What is the purpose of using this symbol by dollar symbol in an Excel formula? Option A, to convert currency, to indicate obsolete cell reference, to highlight the cell, to mark important formulas. Dollar symbol. Purpose. What in Microsoft Excel? You have give as response to option B. Yes,
This is to indicate absolute cell reference. आमे एक्सेल रे तीन प्रकार सेल रेफरेंस देखिए को पाऊ गोटेला absolute cell reference गोटेला relative cell reference आ गोटेला mixed cell reference ताल जनरली सबु बळे हमर relative cell reference ता नॉर्मल रे देखा जाय किंतु जेतेबेले देखिबो लेखा हितबो a एई भली डॉलर सिंबल ला पडिथिबो 1 पुनी पडिथिबो b डॉलर सिंबल पडि कि 1 ता माने बुझिबो जे सेई टाइप रो जदी किछि लेखा आइछि दैट इज द एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस सो डॉलर सिंबल रो जेतेबेले एई भली सेल रो आसे सेटा को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहंती आउ किछि भी नुहे नेक्स्ट आसला how do you display the formula within the cell on an excel worksheet how do you display the formula within the cells on an excel worksheet option a press ctrl plus single quote press f2 select from view menu right click and choose display formula how do you display the formulas within the cells on an Excel worksheet? You have give as A. The right answer is your option A to display the formulas within the cell in worksheet. ताला हमें जो formula रा use करी थिबा तारो result ला कौन display केमती हबो the control सहित single quote को हमें use करिबा ठीक next question for you what shortcut adds a new row in excel what shortcut adds a new row in excel option a control plus shift plus plus control plus plus alt plus shift plus plus shift plus plus which shortcut key adds rows in excel anyone the right answer is control shift plus क्वेश्चन रो माने होची एया जे आमे को शॉर्टकट की मारिले एक्सेल रो वर्कशीट रे नुवा धाडी ऐड हुए नुवा रो ऐड हुए ताले कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जदि आमे एका साइमल्टेनियसली बा एका समय रे यूज करिवा ताले जोठी आमे चाहुतिबा ता परे गोटे हमर रोटा ऐड हे परिबो जदि कंट्रोल के मल्टीपल रो को सिलेक्शन करतिबा ता परे परे सेही बली एका समय रे अनेक गुडा रो भी ऐड हे जिवो ओके next question for you to quickly calculate the sum of a column in excel which feature would you use to quickly calculate the sum of column in excel which feature would you use option a quick analysis tool option b auto sum tool option c formula tab option d all of these to quickly calculate the sum of a column in Excel, which feature would you use? Option A, quick analysis tool. Option B, auto sum. Option C, formula tab. And option D, all of these. You have give response as auto sum. Yes. तमे देखिबो Excel रो होम टैब रो साइट को गोटे सिग्मा भली चिन्ह दिया हिथिबो that is the known as auto sum से auto sum ऊपर जदि तमे क्लिक कर दोउछ तुमको इजीली बा बहुत शीघ्र गोटे डाटा रेंज जोठी निया हिथिबो तार मिश्रण फलडा मिली जिवो नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू व्हाट इज द फंक्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस इन एक्सेल व्हाट इज द फंक्शन टू कन्वर्ट टेक्स्ट टू अपर केस इन एक्सेल ऑप्शन ए अपर केस ऑप्शन बी अपर option C caps option D text off anyone can give the response what is the function to convert text to uppercase in excel
The right answer is obviously option B, this one upper. Upper function रे गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग टा संपूर्ण बड़ अक्षर को बा कैपिटल अक्षर को कन्वर्ट होई पारे जदि आमे एक्सेल रो पूरा पूरी गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग को बड़ करबा को चाहूतिबा बा कैपिटल लेटर को कन्वर्ट करिया को चाहूतिबा सिंपली अपर फंक्शन को जाई ए कामटा आमे कर देई परिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Which function checks for the presence of a text string inside another string? Which function checks for the presence of a text string inside another text string? Option A, find. Option B, search. Option C, in string. Option D, text find. Which is the right answer? The right answer is search. कहीं को फंक्शन एमानक भितर चेक करे जे गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग भितर आउ गोटे टेक्स्ट स्ट्रिंग अछि ना नाही ताले सर्च द्वारा को टेक्स्ट स्ट्रिंग ता में पकेइले से खोजी दबो जे से टेक्स्ट स्ट्रिंग भितर से लेखाटा अछि ना नाही बा को जगह भी निर्दिष्ट जगह से लेखाटा अछि से सही जगहटा तमको पूरा देखे दबो. How can you create a dynamic formula that updates as new data is added? Option A, use an array formula, use a volatile function, use a named range. Option D, all of these. How can you create a dynamic formula that updates as new data is added? Anyone? The right answer is option C. Yes, the right answer is option C. Use a named range. ताले तमरो नेमिंग करिबा द्वारा कोन हुए ना हमरो न्यू डाटा कैन बी adjusted cell by existing range रे making the formulas dynamic. बस सेल मानकर ना दे दवा द्वारा हमको ए कामटा बहुत सुविधा ही जाय कैलकुलेशन का करला को बहुत सुविधा ही जाय. What Excel feature lets you apply a logical test to a value, then return one value if true and another if it false? Option A, if. Option B, test. Option C, check. Option D, decide. What Excel feature lets you apply a logical test to a value, then return one value if true, another value if false? Yes, you have give response as A, and this is the right answer. If returns one value in a data range if a test condition evaluates to true and another values if it evaluates false. ताले से कहया कथा रिटर्न करियो गोटे डाटा रेंज रो गोटे वैल्यू को जोटा कंडीशन अनुसार ट्रू बोली प्रमाणित हबो बा सत्य बोली प्रमाणित हबो एबो बाकी गुडा भी से फॉल्स बोली प्रमाणित कर देबो. जदी डाटा रेंज भितरे गोटे पिलार मार्क एति की अछि ताले से फास्ट हबो जदी फास्ट हबो सेकंड हे परिबोनी थर्ड हे परिबोनी फेल भी हे परिबोनी जदी फेल हैला ताले फास्ट हे परिबोनी सेकंड हे परिबोनी थर्ड हे परिबोनी ताले हमर सेही बोली कंडीशन गुडा का मेंशन होइथिबो एति की मार्क रखले फास्ट हबो सेति की रखले सेकंड हबो सेति रखले थर्ड हबो ताले जोटा कंडीशन अनुसार ट्रू हबो सेटा ही ट्रू रिटर्न करिवो एंड बाकी गुडा को सब फॉल्स बोली प्रमाणित करिवो. सो सेही कामडा जो करिबा कोले हमें ई फंक्शन को ही यूज करू. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. You need to track changes made by team members on an Excel workbook. What feature should you use? Option A, track changes. Option B, audit trail. Option C, revision history. Option D, document inspector. You need to track changes made by team members on an Excel workbook. What feature should you use? Anyone?
The right answer is track changes. Track the changes. माने बेले बेले कौन हुए आमे वर्कशीट ता तैयारी करि थाउ किंतु जणे हमको हैरान करबा को ले भी सेथिरे पर ताकू ऑफिशियली ना तो समस्त डॉक्यूमेंट को यूज करि परिबे हमको हैरान करबा पई सेथिरे किछि चेंज कर दबो तो आमे किछि जानि परिबानी किंतु बाय द वे ट्रैक चेंजेस रे आमे जदी एक्टिव करि दैथिबा ताले हम डॉक्यूमेंट रे जदी किछि चेंज हबो आमे जानि परिबा काइना सेटा ओटे पासवर्ड प्रोटेक्टेड थिबो काम समस्त करि परिबे सब किछि करि परिबे किंतु डॉक्यूमेंट रे कोनोसी चेंज केही किछि करि परिबे नै सेटा मु जहा जहा ऑप्शन सेटिंग करिथिबी ऐड हेले केमति जणा पड़िबो डिलीट हेले केमति जणा पड़िबो फॉर्मेटिंग हेले केमति जणा पड़िबो जहा जहा भी मु ऑप्शन सेटिंग करथिबी ट्रैक चेंजेस रे सेही बळे ट्रैकिंग हे जिवो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू how can you protect a worksheet from being edited accidentally? Option A, use a password, lock cells, set as read only, all of these. Anyone? How can you protect a worksheet from being edited accidentally? You have give as D. Yes, all of these. जदि accidentally बा कोनोसी दुर्घटना बसत चेंज हमर किछि न हो ताले सिति पे हमें कोन करिबा प्रोटेक्शन केमि दबा पासवर्ड देले भी हे जिवो प्रोटेक्शन लॉक कर देले भी सेल भी आ चेंज हबनी काइना से फिक्स हे गला आ किछि चेंज हबनी सेट एज रीड ओनली मार देले भी केवल जने पढिबो किछि चेंज करि परिबोनी तो ऑल ऑफ दिस जहां भी करो ही परिबो प्रोटेक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू how do you determine the number of numeric entries in a range? Option A, use count. Option B, use non count. Option C, use count num. Option D, use count A. Anyone? How do you determine the number of numeric entries in a range? You have give as a response as a s count द्वारा केवल नंबर जिंस गुडा को आमे सेल रे जहा एंट्री थिबो हबो टेक्स्ट टेक्स्ट मिसिक दिले हबो नाही तेनु करी केवल से कहितला को फंक्शन रे नंबर गुडा को जणा पड़िबो ऑब्वियसली काउंट फंक्शन रे ही न्यूमेरिक वैल्यू गुडा ही काउंटिंग भीतर को जाय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू दिस वन which Excel function is used to calculate the internal rate of return for a series of cash flows? Option A, IRR. Option B, ROI. Option C, IRR/VAL. Option D, net rate. Anyone? Which option is the right answer? This one, IRR, internal rate of return. एगुडा कहू एक्सेल रे बेसिकली हमें 9 प्रकार फंक्शन को यूज करू से जो 9 प्रकार फंक्शन को यूज करू ता भीतर गोटे कैटेगरी अछि फाइनेंशियल फंक्शन ताले से जो फाइनेंशियल फंक्शन रे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बस दे दैछि ऑलरेडी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ता शॉर्ट फॉर्म ता होछि आईआरआर तो ये आईआरआर फंक्शन द्वारा हमें इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न को बाहर करि परिबा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू this one what does the function xlookup replace in newer version of Excel? What does the function xlookup replace in the newer version of the Excel? Option A, VLOOKUP and HLOOKUP. Option B, lookup. Option C, match. Option D, index. Anyone? What does the function xlookup
replace in newer version in Excel? Option A, VLOOKUP and HLOOKUP. Option B, lookup. Option C, match. Option D, index. Anyone? The right answer is VLOOKUP and HLOOKUP. जेतबे पुराना वर्जन थिला XLOOKUP ता जगह रे नुवा वर्जन रे कोन रिप्लेसमेंट कराई VLOOKUP एवं HLOOKUP. VLOOKUP माने वर्टिकली लुकअप एंड HLOOKUP माने ला हॉरिजॉन्टल लुकअप. ये दीटा होचे बहुत इंपोर्टेंट फंक्शन. आमे केबे स्पेशल फंक्शन ऊपर जेतबे क्वेश्चन करिबा मो एडा को तुमको आहुरी भलो से बुझी देई परिबी. किंतु एति केवल मन रखियो पड़िबो पुराना वर्जन रे जो XLOOKUP थिला ता जगह रे ए दीटा रिप्लेसमेंट हेछि. Next question for you. How do you calculate the number of work days between two dates excluding work ends and holidays? How do you calculate the number of work days between two dates excluding weekends and holidays? Option A, birthday. Option B, net birthdays. Option D, total days. Option D, birthdays. Anyone? The right answer is net work days. से कहितिला एमानक भितरु को फंक्शन को तमे यूज करिवो जहा कि दीटा डेट मने करो मास गोटे पड़ीची दशहरा छुट्टी हिची से दशहरा छुट्टी आरंभ डेट टा पड़ीची एंड दशहरा छुट्टी लास्ट डेट टा पड़ीची से कहिया कथा ता भितरे केते वर्किंग डे बा गोटे मासर 1 तारिख पड़ीची मासर शेष अगस्त मासर 31 तारिख पड़ीची ता भितरे से कहूची जे एक्सक्लूडिंग कर दबो वीकेंड एवं तमरो जो कहूचो जो संडे गुडा को जो कहूचो वीकेंड आउ तमरो से जो हॉलिडे गुडा कहूचो से तो हम जानि से कंप्यूटर रे ऑटोमेटिकली इंटरनेशनल हॉलिडे डे उडा सो कंसीडर हुई छुट्टी डे कंसीडर हुई तो ए मान को भीतर को फंक्शन रे जणा पड़े जे एक्चुअली केते दिन काम होउची बा गोटे जगह रे जदी कैलकुलेशन करिबार अछि केमति जणा पड़िबो तो बाय द वे नेट वर्क डेज फंक्शन द्वारा एटा हेइ जाय परिबो. नेक्स्ट, which function can be used to perform a lookup across multiple criteria in Excel? Option A, XLOOKUP. Option B, DLOOKUP. Option C, multi-lookup. Option D, SUMIFS. Which function can be used to perform a lookup across multiple criteria in Excel? Anyone? The right answer is XLOOKUP. एई फंक्शन द्वारा आमे गोटे एक्सेल रा क्राइटेरिया बेसिस गोटे जिंस को खोजी देई परिबा. लुकअप रो काम होला टू व्हाट टू सोर्स डाटा आइदर फ्रॉम ए रो और फ्रॉम ए कॉलम रेंज. What function should be used to find the root of a number in Excel? What function should be used to find the root of a number in Excel? Option A, SQRT. Option B, root. Option C, POW. Option D, radical. Which function should be used to find the root of a number in Excel? Obviously SQRT आ कोन SQRT होची गोटे फंक्शन जोटा कि हमरो रूट वैल्यू बा जो कहंदी वर्गमूल बाहर करिबा पई गोटे नंबर रो बा गोटे संख्यार वर्गमूल केते जानिबा पई यूज करा जाय. नेक्स्ट क्वेश्चन, which function allows you to count unique values within a range that meets specific criteria? Option A, count if. Option B, count A. Option C, count ifs. Option D, unique. Which function allows you to count unique values within a range that meets specific criteria? You have give response as D.
एस यूनिक वैल्यू माने कौन यूनिक वैल्यू गुडा अछि स्पेसिफिक क्राइटेरिया अनुसार यूनिक द्वारा ही जना पड़े बा यूनिक फंक्शन द्वारा ही जना पड़े नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ कैन यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ एन asset using a double declining balance method in excel how can you calculate the depreciation of an asset using the double declining balance method in excel option a DDB, option B, DB, option C, SLN, option D, S.B.I. Anyone? You have give response as B, S, DB, double declining balance method, DB method रे इटा हमर जानि पारू. Next question for you. What Excel function is used to forecast a future value based on existing values? Option A, forecast. Option B, predict. Option C, project. Option D, estimate. Anyone? What Excel function is used to forecast a future value based on existing values? The right answer is forecast. Forecast आमे Excel रो को फंक्शन द्वारा फ्यूचर वैल्यू केते हबो एक्जिस्टिंग वैल्यू को नै कि ओडे प्रेडिक्शन करू सेटा होय फोरकास्ट फंक्शन रे नेक्स्ट आसला हाउ कैन यू split text from one cell into multiple cells option A use text to columns feature use split function use divide use segment which is the right answer how can you split text from one cell into multiple columns anyone this one use text to columns तमरा धरिनियो गोटे सेल रे तमे ऑलरेडी एंट्री कर सलणी नेम बेसिक पे टीए एचआरए डिडक्शंस ग्रॉस पे नेट पे सब गोटे सेल रे तमे लिख सलणी तमरा लक्ष्य नाही जे एडा सब मल्टीपल सेल रे एंट्री तांदा एंड तळगु तळगु डाटा से अनुसार एंट्री ही तांदा तो से जगह रे गोटे भी तुमको सुविधा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी देइची एक्सेल रे तो टेक्स्ट टू कॉलम्स जदी मारी दउचो से जो टेक्स्ट गुडा गोटे सेल रे थिबो से सब्सिक्वेंट सेल को पैरेलली स्ट्रेच हिजबो पळेइबो नेक्स्ट असला which tool in excel can automatically apply complex calculations to data in a table format which tool in excel can automatically apply complex calculations to data into table format option A formulas option B functions option C what if analysis option D quick analysis which tool in excel can automatically apply complex calculations to data in a table format the right answer is what if analysis what if analysis रे आमे गोटे टेबल फॉर्मेट रे थिबा डाटा को एनालिसिस करि परिबे सो व्हाट इफ एनालिसिस रे बहुत सारा जिंस अछि गोटे गोल सिक अछि गोटे हमर कंसोलिडेट अछि तो एही प्रकार सब जिंस गुडा के द्वारा आमे इजीली टेबल फॉर्मेट रे थिबा डाटा को एनालिसिस करि परिबा नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू हाउ डू यू लिंक डाटा फ्रॉम ए सेल in one worksheet to another worksheet within the same workbook. Option A, use the link feature, type the cell reference directly, use a hyperlink, use a formula.
Anyone? S, option B, type the cell reference directly. Cell reference को directly हमें apply कले ताले हमें कौन करी परिबा link करी परिबा डाटा को गोटे cell रे थिबा. Next, what function calculates the sum of the products of corresponding rays of or arrays? Option A, sum product. Option B, product sum. Option C, multi sum. Option D, array sum. Anyone? The sum product can calculates the sum of the products. गुणी थिबा value रकर मिसाण हमें सही फंक्शन द्वारा जानी परिबा. Next question for you. What is the purpose of the indirect function in Excel? To delay calculations, to convert text into formula, to prevent auto calculation, to create a dynamic cell reference. What is the purpose of indirect function in Excel? This one, to convert text into formula. Okay, next question for you. Which function dynamically ranks values within a data set in Excel? Which function dynamically ranks values within a data set in Excel? This one, rank echo function. How do you array enter formulas in Excel? How do you array enter a formula in Excel? This one, press Ctrl plus Shift plus Enter. जदि मारी दोचे ताले multiple calculation गुड़ा का मैं करूचे. Which function would you use to analyze trends in data over intervals you specify? This one, line set. Next question for you. What feature would you use to automatically update the results of a formula when the input data changes? Auto calculate द्वारा हमें किसी चेंज करि परिबा ऑटोमेटिकली अपडेट्स गुडा का जहां आसुथिबो. You have a large data set where multiple entries for individual need to sum up. Which of the function helps to stream this process? This one, sum ifs. एका समय रे multiple condition को नहीं कि तमे sum बाहर करि परिबो. Okay, so time is very short and topic is very large. समय बहुत कम, विषय हम पाके बहुत अछि. तो आज भाबुची मु जहा कवर करछि तम माने बुझी पारुथिबो. एंड नेक्स्ट को आउ किछि एमती इंटरेस्टिंग टॉपिक नै मु आसीबी डिस्कशन करिबा. ओके, थैंक यू ऑल फॉर जॉइनिंग दिस क्लास.